Hello everyone, welcome to this class. आज आमे एही क्लास रे जीके रो मिसलेनियस टॉपिक को प्रैक्टिस करिवा. एथिरे आपनकर 100 MCQs रहिची फॉर योर एग्जाम SSB Junior Assistant and Clerk. आपण एही PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे. ठीक अछि, चलंतु ट्राई करिवा. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is not a function of the Reserve Bank of India RBI? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी RBI रो फंक्शन हेबो नाही. Which option is your right answer? Try करंतु. Reserve Bank of India issuing currency. ठीक अछि, currency को इश्यू करे. Controlling inflation, that is also right answer हे जिवो. ऑप्शन सी रे कहूची accepting deposits from the public. एही ऑप्शन टी आपनकर हबो नाही. So option C is your right answer. And option D managing foreign exchange मध्ये होई परिबो. But directly पब्लिक डिपोजिट को एक्सेप्ट करे नाही आरबीआई. मन रखंतु, आरबीआई होची एक भारतर केंद्रीय बैंक जाको बैंकर्स बैंक मध्ये कुहा जाय. यह साधारण लोकंक ठारू डिपोजिट ग्रहण करे नाही कि लोन मध्ये दिया नाही. ठीक अछि, यह कमर्शियल बैंक्स माने करंती. राइट. सो ऑप्शन सी होई जो यार राइट आंसर. मन रखंतु. नेक्स्ट सिवा क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिवा. ट्राई करंतु. Which sector contributes the most to India's GDP in recent year? Which option is your right answer? सर्वाधिक अवदान विषय जदि कथा बा भारतर जो जीडीपी रे सर्विस सेक्टर रो योगदान रहिछि. सर्विस सेक्टर मन रखंतु. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ओके, सर्विस सेक्टर ही जो है राइट आंसर. किंतु आमे जदि कथा बा सर्वाधिक लोक का ऊपर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर ऊपर. ठीक अछि, एग्रीकल्चर इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी मींस व्हाट? जीडीपी होचे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज योर जीडीपी. कोन है जीडीपी? जीडीपी होचे गोटिया आर्थिक वर्ष रे देशर जो भौगोलिक सीमा रहिछि. ठीक अछि, से भौगोलिक सीमा मध्य रे उत्पादित समस्त प्रोडक्ट एंड सर्विस, दिस इज आपनकर जीडीपी. ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? ट्राई करंतु. निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक डायरेक्ट टैक्स अटे? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स होचे एक डायरेक्ट टैक्स अटे. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ओके, इनकम टैक्स मन रखंतु. जीएसटी, देन कस्टम ड्यूटी, ओके, एंड एक्साइज ड्यूटी, ए सब गुडाक आपनकर इनडायरेक्ट टैक्स अटे. ऑप्शन बी हैव राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिवा. व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्यों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाश करा जाए? क्यों ऑर्गेनाइजेशन? यूएनडीपी. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा याकू प्रकाश करा जाए. ठीक अछि, एथिरे आपनकर तीनोटी सूचकांक रहिछि. गोटिए होछि स्वास्थ्य, अन्यटी शिक्षा एवं जीवन जो धारणर मान. ठीक अछि, ए तीनोटी सूचकांक को नै प्रकाश करा जाए. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेफर्स टू कोन हबो कोंतु? इन्फ्लेशन रेफर्स टू व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? जाकू मुद्रास्फीति को जाए. व्हिच ऑप्शन? इन्फ्लेशन होछि decrease in the value of money. This is your inflation. Decrease in the value of money, this is आपनकर inflation. ओके, जो आपनकर दर दाम वृद्धि पाइबो, टंकार जो प्रयोग करिवार क्षमता ह्रास पाइबो, दिस इज आपनकर inflation. नेक्स्ट, which one of the following is included in the primary sector? एग्रीकल्चर होछि आपनकर प्राइमरी सेक्टर. ओके, एग्रीकल्चर इज योर राइट आंसर. एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर. कोन कोन हमर जो तीनोटी सेक्टर रहिछि कोन कोन सेटा? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री प्राइमरी. सेकेंडरी रे कोन आसीबो कोंतु? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री. ओके, एंड नेक्स्ट रहला आपनकर टर्सरी सेक्टर व्हिच इज सर्विस सेक्टर, बेसिकली बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ए सब गुडा हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर मींस कोन हबो कोंतु? Disinvestment in public sector.
selling shares of public enterprises. Option B, selling shares of public enterprises. This is आपनकर disinvestment कहा जाए, अर्थात जो सरकारी उद्योगर କିଛି अंशधन ଯାହାକୁ शेयर कहा जाए ताको घरोई संस्था वा जनसाधारण को बिक्री करी पांठी संग्रह करवा होची, this is आपनकर disinvestment. Okay, the make in India initiative was launched in कोंतु 2014 रे लॉन्च करा दिथिला, 2014 रे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च करा दिथिला. नेक्स्ट, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड एलपीजी, ट्राई करंतु. एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया. याकू केउ कमिटी रेकमेंड करथिले, याकू केउ कमिटी रेकमेंड करथिले? ऑप्शन बी होइज राइट आंसर. नरसिम्हम कमिटी याकू रेकमेंड करथिले, मन रखंतु. बैंकिंग एंड जो आर्थिक क्षेत्र रे संस्कार पई याकू सुपारिश करा दिथिला. तबले प्रधानमंत्री किए थिले पीवी नरसिम्हा राव एंड अर्थमंत्री किए थिले कोंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करंतु. हु इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? यूनियन एग्जीक्यूटिव रो हेड किए अटंती? प्रेसिडेंट. ऑप्शन बी होइज राइट आंसर. प्रेसिडेंट हेउछ द यूनियन एग्जीक्यूटिव रो हेड. एंड आमे जदी कथा बा रियल और जो कहा जाए ना de facto head होचंती प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, which article of the constitution deals with the abolition of untouchability? Abolition of untouchability होची आर्टिकल 17. आर्टिकल 17. ओके, आर्टिकल 17. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The directive principle of state policies are borrowed from the constitution of DPSP को क्यों constitution रू borrow करा जायछि? Irish constitution means आयरलैंड रो constitution रू DPSP को borrow करा जायछि, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करिबा. Which schedule of the constitution contains provisions related to पंचायत राज? पंचायत राज व्यवस्था विषय रे भारतीय संविधान रो क्यों शेड्यूल रे वर्णना करा जायछि? 11th शेड्यूल इज राइट आंसर. ऑप्शन सी, 11th शेड्यूल मन रखंतु. नेक्स्ट, द टर्म ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा रो टर्म केते? लोकसभा रो कार्यकाल होची 5 वर्ष, ठीक अछि, 5 वर्ष मन रखंतु. राज्यसभा रो 6 वर्ष. नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ऑप्शन सी होइज राइट आंसर. ओके, उभय लोकसभा एवं राज्यसभा रो समस्त सदस्य इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक अछि, द्वारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुअंती. नेक्स्ट, हु कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? राज्यपाल को किए तांको पोस्ट रु बाहर करि परिबे? ए क्षमता कहा निकट रे अछि? प्रेसिडेंट, ठीक अछि. राज्यपाल राष्ट्रपति जो माने राष्ट्रपति द्वारा से परिचालित, तेणु राष्ट्रपति ही तांको हटै परिबे. सो प्रेसिडेंट इज यार राइट आंसर. ऑप्शन सी मन रखंतु. नेक्स्ट, द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम. जुडिशियल रिव्यू रो कथा कुआ गला यूएसए रु आना जायछि. फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू यूएसए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करंतु. व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन फॉर द पंचायत राज सिस्टम? यो अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करा जायछि. ओके, नेक्स्ट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली. मनी बिल को केवल लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस करा जाय. आर्टिकल 110 मन रखंतु. मनी बिल आर्टिकल 110. ओके, याकू राज्यसभा रे केवल आलोचना ही करा जाय परिबो, बट इंट्रोड्यूस हबो आपनकर लोकसभा. नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? कोंतु मौर्य एम्पायर रो फाउंडेड, मौर्य जो साम्राज्य रहिला यार प्रतिष्ठाता की अटंती? क्वेश्चन नंबर 21. ऑप्शंस अनुसार ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य हिज राइट आंसर. ठीक अछि, चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य अर्थात जो कौटिल्यंक सहायता रे धनानंद को परास्त करी
मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन कोंतु द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन क्यों मसिया रहितला 1757 रे पलासी युद्ध मन रखंतु। ओके रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद्दौला मध्य रे। नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 राइट लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर जहां को फादर ऑफ सिविल सर्विस मध्य को जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस मन रखंतु। चिरस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करिवा। ओके which Indus Valley site is located in present day Pakistan? वर्तमान रो पाकिस्तान रे क्यों इंडस वैली साइट टी अवस्थित अटे? हरप्पा हरप्पा रही वर्तमान रो पाकिस्तान रे। नेक्स्ट हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट? स्वराज इज माय बर्थ राइट ए स्लोगन टी किए दिथिले? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी होइज द राइट आंसर। ओके बाल गंगाधर तिलक यह एक स्लोगन स्वराज मो जन्मगत अधिकार एवं मु एहाको हासिल करिवि। ठीक अछि तांको लोक मान्य मध्य कुआ जाय बाल गंगाधर तिलक। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे अगस्त मास 8 तारिख। ठीक अछि करबा मर गांधी जी नारा थिला। नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज किए थिले? प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट हु कंपोज्ड द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? ट्राई करंतु। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किए कंपोज करथिले? हरीश सेना। हरीश सेना इज द राइट आंसर। ओके हरीश सेना समुद्र जो गुप्तंकर जने दरबार जने कवि एवं समुद्र गुप्तंकर जो विजयर कहानी को सेठारे वर्णना करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच मोगल एम्परर बिल्ट द ताजमहल? ताजमहल को किए निर्माण करथिले? ताजमहल को शाहजहां आग्रा रो जमुना नदी कूल रे मुमताज महल कर स्मृति रे निर्मित आपनकर ताजमहल सो शाहजहां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज The capital of the Vijayanagar Empire was Hampi thila. कौन थिला? Hampi. Option B is your right answer. Next, which is the largest river in India? गंगा नदी। ठीक अछि 2525 किलोमीटर मन रखंतु। गंगा नदी इज your right answer. गंगा नदी। ओके नेक्स्ट एंड जदि हम कथा पेनिनसुलर इंडिया रो गोदावरी नदी। पेनिनसुलर इंडिया माने दक्षिण भारत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? ट्राई करिवा। 8टी कौन कौन से 8टी राज्य किए कहि परिबो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम मन रखंतु। नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेजर्ट निम्नलिखित मध्यरु केउंटा? सहारा डेजर्ट। ओके गोबी होची एशिया रो एक कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? What is the capital of Andaman and Nicobar Island? पोर्ट ब्लेयर तो यार पुराना राजधानी पुराना नामटा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रो न्यू गोटे आपनकर कैपिटल रहउची सेटा आपन कमेंट सेक्शन रे कहिबे। ठीक अछि सेटा अपडेट हे सारिची आपन कमेंट सेक्शन रे जणातु कोन हो। नेक्स्ट व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? Which Indian state has the longest coastline? Gujarat. Gujarat is your right answer. Next, what is the highest peak in India? India highest peak Kanchenjunga. Kanchenjunga is your right answer. Okay. Kanchenjunga is India highest peak. Next, the black soil is most suitable for growing cotton. Okay. याको रिगुर soil मध्य को आजे cotton चाष भलो हबो एथिरे कप्पा चाष. The standard meridian of India passes through Standard meridian of India passes through 82.5 degree east is the right answer.
Next question number 39. Which river is known as Dakhina Ganga? Godavari को दक्षिण गंगा कुहाଯାଏ दक्षिण भारतर बड़ नदी. Next. Which Indian lake is the largest salt water lake? Salt water lake. Largest salt water lake is Chilika, located in Odisha. Chilika lake. Which gas is essential for photosynthesis by carbon dioxide CO2? Okay. Carbon dioxide CO2 is the right answer. Next. Which part of the human brain controls balance and coordination? Human brain रो केउ part balance and coordination ପାଇଁ this is कौन को आजिबो एटा शरीर रो जो भारसाम्य सब को नियंत्रण करे cerebellum option C is your right answer. Next, what is the chemical symbol for sodium? Sodium ro chemical symbol होची sodium रो Na. Okay, Na. Next, question number 44. Which vitamin is produced in the human body when exposed to sunlight? Sunlight ru vitamin D. Vitamin D is your right answer. Which planet is known as red planet? Try करंतु. Which planet is known as red planet? Which option is go? Mars. Option C is your right answer. Next, which acid is found in stomach? Stomach रे क्यों acid रही stomach रे? Stomach रे आपनकर क्यों acid रही hydrochloric acid HCl. Hydrochloric acid. Sound cannot travel through a vacuum because sound travel करिया पई किछि ना किछि गोटे medium रा आवश्यकता है. Next, which device is used to measure temperature? Temperature को measure करिया पई thermometer को use करा जाय. Option B, thermometer is the right answer. Next, which metal is liquid at room temperature रे? क्यों metal liquid state रे थाए room temperature रे? Mercury is your right answer. Okay, mercury is your right answer. Next, question number 50. Which organ purifies blood in the human body रे? Which organ? Kidney रो काम अछि. Option B, kidney is your right answer. The currency of Japan is Japan रो currency कोन हिजबो कोंतु? Japan रो currency कोन हिजबो? yen. Yen होछि Japan रो currency. Next, who wrote the national anthem of India? National anthem of India को के लिखिथिले? रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन बी मन रखंतु रविंद्रनाथ टैगोर. एवं जदि परीक्षा रे आसीबो वंदे मातरम को के लिखिथिले? जातीय गीत संगीत आउट होची गीत बंकिम चंद्र चटर्जी. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान रो राजधानी कोन हो कोंतु? भूटान रो राजधानी होची थिम्फू मन रखंतु. यार करेंसी कोन? यार करेंसी होची भूटान रो करेंसी कोन आपण कमेंट सेक्शन रे कहबे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54. Which is the largest freshwater lake in India? Largest freshwater lake in India. Ullur Lake, located in Jammu and Kashmir. Ullur Lake man rakhantu. Next, who is known as the missile man of India? Who is known as the missile man of India? Dr. APG Abdul Kalam. APG Abdul Kalam is your right answer. Which sport is associated with Wimbledon? Wimbledon सहित आपनकर टेनिस जोड़ित. Next, question number 57. Which is the highest civilian award in India? Bharat Ratna पुरस्कार. ठीक भारत रत्न is your right answer. Bharat Ratna, then Padma Vibhushan, Padma Bhushan, then Padma Shri. Okay. Next, question number 58. Where is the headquarter of the United Nations? New York रे रहिछि United Nations रो headquarter. केउठारे? New York is your right answer. मन रखंतु. Next, which Indian state is known as the Spice Garden of India? Spice Garden of India, Kerala. Kerala is your right answer. This is Spice Garden of India. The first Indian satellite was प्रथम भारतीय satellite कोन थिला? आर्यभट्ट. Option A is your right answer. आर्यभट्ट मन रखंतु. Okay. Next, how many players are there in a hockey team? Hockey team रे आपनकर 11 जण. क्रिकेट रे मध्ये 11 जण.
Who discovered penicillin? Penicillin को किए आविष्कार करथिले? Alexander Fleming. Option B is your right answer. Okay. Next, the headquarter of ISRO is located Bengaluru. ISRO headquarter Bengaluru रे अवस्थित. Next, which is the national aquatic animal of India? National aquatic animal of India कौन है जी वो? Gigantic dolphin. Option B is your right answer. Who was the first woman prime minister of India? Indira Gandhi. Option C is your right answer. Next, which is the largest continent by area? Largest continent Asia. Asia महादेश होची सबठारु बड़ महादेश. What is the national flower of India? Lotus. Option C is your right answer. In which year did India become a republic? India become a republic 1950 रे. Next, which day is celebrated as World Environment Day? World Environment Day 5 जून को World Environment Day भाବରେ सेलिब्रेट करा जाए. 22 एप्रिल कोन आपनकर अर्थ डे एंड 16 सेप्टेम्बर मन रखंतु वर्ल्ड ओजोन डे. नेक्स्ट, where is the statue of unity located? Statue of unity आपनकर गुजरात रे रहिछि ना. Statue of unity गुजरात is the right answer. Okay, next try करंतु. Which is the largest district in Odisha? ओडिसा रो सबठारु बड़ जिल्ला. ओडिसा रो सबठारु बड़ जिल्ला होछि मयूरभंज जिल्ला. मयूरभंज is the right answer. The Hirakud Dam is built on which river? Mahanadi. Hirakud Dam, Mahanadi. Next, what is the official language of Odisha? Odia. Next, who was the first chief minister of Odisha? Who was the first chief minister of Odisha? Try karantu. Hare Krishna Mahata. Okay, Hare Krishna Mahata. मन रखंतु जदि परीक्षार प्रश्न आसीबो प्रथम प्रधानमंत्री माने 1937 रो कथा कृष्णचंद्र गजपति. Which dance form is Odisha famous for? ओडिसी. ओडिसा रो ओडिसी नृत्य. Next, Similipala National Park is located in Similipala, Mayurbhanj जिल्ला रे रहिछि Similipala National Park. In which year was Odisha state formed? 1936 April मास 1 तारिख. Which place is famous for छौ dance? छौ dance पय आपनकर प्रसिद्ध छौ dance ट्राई करिवा. बारीपदा इज राइट आंसर. ठीक अछि, मयूरभंज रो बारीपदा पय बारीपदा मयूरभंज. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा? सांबर. सांबर होची स्टेट एनिमल. सांबर डियर. ओके, एंड जो इंडियन रोलर होची यूज राज्य रो पक्षी एंड अश्वत्थ होची राज्य वृक्ष. हु इज नोन एज द उत्कल गौरव भाबरे किए जाना जान? उत्कल गौरव मधुसूदन दास. ऑप्शन बी होइज राइट आंसर. उत्कल गौरव मधुसूदन दास. नेक्स्ट, in which district is famous for? Try करंतु. In which district is famous for घुमरा dance? घुमरा dance पय केउ जिल्ला प्रसिद्ध हटे? घुमरा dance होची कलाहांडी. ऑप्शन ए होइज राइट आंसर. कोणार्क सन टेंपल वाज बिल्ट बाय नरसिंह देव प्रथम कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्माण करथिले. ब्लैक पागोडा. Which is the only UNESCO World Heritage Site in Odisha? Sun Temple, Konark, Black Pagoda. Next, question number 84 try karantu. Where is the Rukuna Ratha Jatra celebrated? Rukuna Ratha Jatra केउंठारे सेलिब्रेट करा जाय? Rukuna Ratha Jatra भुवनेश्वर रे सेलिब्रेट करा जाय. ऑप्शन सी होइज राइट आंसर. नेक्स्ट, which river flows through the city of Cuttack? कटक जिल्ला मध्य देई आपनकर महानदी महानदी प्रवाहित हुए. ओडिशा shares its border with how many states? चारोटी. चारोटी ठीक अछि. पश्चिम रे छत्तीसगढ़, दक्षिण रे आंध्र प्रदेश, पूर्व उत्तर पूर्व रे वेस्ट बेंगल एवं उत्तर रे झारखंड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87. चिलिका लेक इज फेमस फॉर व्हिच स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन पाई? इरावाडी डॉल्फिन चिलिका लेक रे आपण देखिया पई पाइबे. केउ डॉल्फिन? इरावाडी डॉल्फिन मन रखो. इरावाडी डॉल्फिन ठीक अछि जो आपनकर सातपड़ा अंचलटा. नेक्स्ट, द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स? 147. 21 होची लोकसभा, 10 टी होची राज्यसभा, 147 टी होची विधानसभा. आसन संख्या मन रखंतु. नेक्स्ट, व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज नो रेलवे कनेक्टिविटी एज ऑफ नो रेलवे कनेक्टिविटी? एटा टी देखिबे आपण. ठीक अछि, एज ऑफ रिसेंट डाटा अनुसार
यार राइट आंसर कौन हो आपण कमेंट सेक्शन में जणाइबे। नेक्स्ट, वेयर इज द ओडिशा स्टेट म्यूजियम लोकेटेड? ओडिशा स्टेट म्यूजियम भुवनेश्वर रे अवस्थित। ओडिशा स्टेट म्यूजियम, राइट। नेक्स्ट, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार भाबरे केउ प्लैनेट जणा जाय? Venus is your right answer. Option B is your right answer. Who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal? प्रथम इंडियन, प्रथम इंडियन किए अटंती? अभिनव बिंद्रा। Option A is your right answer. Next, the famous book Discovery of India was written by Jawaharlal Nehru. Option C is your right answer. Next, which gas is most abundant in the Earth's atmosphere? Nitrogen gas सबुठारु अधिक परिमाण रे रहिछि। Who was the first woman governor of an Indian state? Also Sarojini Naidu ही हबो। Option A, ठीक अछि, Sarojini Naidu is your right answer. उत्तर प्रदेश रो थिले, ठीक अछि। Next, which state has the largest number of Lok Sabha seats? उत्तर प्रदेश रही। ओके, उत्तर प्रदेश ही जबना, उत्तर प्रदेश मन रखन, उत्तर प्रदेश रही सबुठारु अधिक संख्यक राज्य माने लोकसभा सीट रही। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हूर हेडक्वार्टर केउंठरे रही? हूर हेडक्वार्टर रही जेनेवा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज आल्सो कॉल्ड पंजाब केसरी भाबरे के जणा जानती? पंजाब केसरी भाबरे के जणा जानती? लाला लाजपत रॉय। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the right to education? Right to education होची आर्टिकल 21A। एथरे कोन कुहा गला? एथरे कुहा गला 6 रु 14 वर्षर जो पिलांग पई मागणा एंड जो कंपलसरी बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार करा गला। नेक्स्ट, which Mughal emperor was known as the जिंदा पीर? जिंदा पीर भाबरे के जणा जाउथला? औरंगजेब हिज बकी। ऑप्शन सी औरंगजेब, ठीक अछि। से जणे जो तांकर धार्मिक जीवन शैली पई वो जिंदा पीर, लिविंग सेंट, ओके कहा जाउथला। सो आउट ऑफ 100 आपण केतोटी प्रश्न सटीक भाबरे करि परिछंती? आज रो क्लास टे आपनकर मिसलेनियस क्वेश्चंस थिला। एमिति प्रश्न आपनकर परीक्षा आसीबार बहुत चांस रहिछि। दैट्स व्हाई देखंतु आउट ऑफ 100 आपण केतोटी करि परछंती कमेंट सेक्शन रे जणांतु। क्लास टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एही चैनल रो जॉइन बटन रे जॉइन करी मध्ये आपण सपोर्ट करि परिबे। आई होप एही क्लास टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास।